Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, in this particular video, we will talk about the lessons, the overall lessons which I have learned from David Goggins' book Can't Hurt Me. So, let's start this particular video. So, I will the first like there are total 10 chapters, and in all of them, at the end of each of the chapter, he he gave us a one challenge which we can apply, which we can do in our life, so that we will be get disciplined in our life. So the first challenge is may make use of the accountability mirror. Okay, so क्या होता है अकाउंटेबिलिटी मिरर? तो इसका मतलब ये है कि जो आपके सामने मान लीजिए एक मिरर है, तो आपको क्या करना है, उस मिरर पे ना स्टिकी नोट्स लगा देने हैं। तो हमने उस पर स्टिकी नोट्स लगा दिए, तो हमें उसका यूज़ करना है कि व्हाट आर आवर वीकनेस, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर आवर डे टू डे गोल्स, व्हाट आर आवर वीकली गोल्स। तो हमें इन सब चीज़ का यूज़ करा मिरर पर लिखना। जैसे कि लेट मी गिव एन एग्जांपल। मुझे अपना जो वेट है वो लूज़ करना है, तो जो मेरा वेट है वो लूज़ कैसे होएगा कि मान लो कि मैं अपने आप को आई सी माई सेल्फ इन अ मिरर एंड आई वॉन्ट कि इन द नेक्स्ट 6 months और इन नेक्स्ट 1 year I want to lose this much amount of fat, I want to get 6-pack abs. So you want, so say those particular words in front of mirror, and ये चीज़ बहुत हेल्प करती है यार. It helps a lot. And other things you can do is that being accountable is you should hold yourself accountable to everything which is going on in your life. Okay, and write down all your fears, all your dreams, your insecurities, failures on sticky notes, on those sticky notes, and paste them on the mirror. And I guarantee that it will help you a lot if you try this in your life. Just get yourself a small mirror and then go ahead. And the other thing is it can be harsh, but it's okay to be unkind to yourself. Okay, it's totally okay to be unkind to yourself. Sometimes you need to judge yourself harsh on those activities or your actions which you are doing in life, such as sometimes you are being sluggish, and you are being sluggish or just lazy and not doing your task which you need to be done, so that you can achieve your day to day goals. So तो तुम्हें भाई उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मैं ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर रहा हूँ, और तुम्हें सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी, या तुम्हें अपने आप से ही बातें करनी पड़ेंगी। रात को फ़ोन बंद करो, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो तुम यूज़ कर, लैपटॉप हो गया, पीसी एंड योर मोबाइल फ़ोन, इन सबको बंद करो, एक पेन पेपर लो, उसके ऊपर लिखो कि भाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड, हाउ इज़ योर थॉट प्रोसेस, what you want to achieve next in life, and what is your nature. Are you a toxic person or a helpful person? Like तुम्हें ऐसी चीज़ें दे, you should first know yourself कि भाई लोग कहते हैं ना कि भाई you are the average of 5 people around which you spend most of your time with. But my say is that why don't you are becoming the average of 5%, so why don't you first try to understand yourself, spend the most of your time with yourself, and just try to be, and why don't we try to be average of ourselves first ना. Like हम ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते? We need to figure out this thing also, like, and this can only be achieved when we listen to our thoughts which are going in our brain, like all the bad things or good things which we have done in our life. Just sit with yourself, try make your mind wander here and there.
लाइक कि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि भाई हम अपने माइंड को ना खाली छोड़ते ही नहीं है। लाइक जैसे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आई एम मेकिंग फूड और वॉशिंग द डिशेस, तो उसमें क्या होता है हम बिहाइंड में पीछे सॉन्ग्स चला देते हैं। जैसे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम सॉन्ग सुन लेते हैं। कोई मतलब खाना खा रहे हैं, खाना खाने पे ध्यान नहीं है एंड हम उसमें भी यूट्यूब वीडियोस एंटरटेनमेंट फाइंड आउट करने के ट्राई करते हैं। तो हमें वी नीड टू eliminate these particular things. These small action will someday lead to a big change in life, and this is the power of compounding, which is just which I am not glorifying, but it is very incredible. You should try this thing. The power of compounding. Just take small steps known as baby steps, and then one day it will make a big change in your life. Okay, so the next challenge number 2 is just callous your mind. Callous your mind means तुम्हें अपने माइंड को ना घिसना पड़ेगा, दिमाग को घिसाना पड़ेगा। जैसे कि कोयला है, कोयला काला, वी हैव हर्ड दैट लाइन ना कि कोयला काला है चट्टानों ने पाला है। लाइक एंड ऑल्सो फॉर लाइक हमें अगर डायमंड बनाना है तो उसको भी जो एक्सट्रीम प्रेशर, इट नीड टू लाइक द प्रेशर समवेयर अराउंड 60,000 atm. Like this is the actual pressure which is needed to make diamond. So for making diamond we need that much amount of pressure. It has to go through all those rigorous process, and the same goes with the brain also. Like we need to make efforts, try to recall different things, and इसका यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा. This is the point, like callous your mind to do hard things. Why should we not do hard things? Try to do hard things in life. Okay, and challenge number 3, let's move to challenge number 3, which I do not feel like it can be good for you. It can be much more beneficial for you, but now at this particular moment it is not much beneficial for me. So the challenge number 3 is take souls of your enemy by working harder. Like let me give you an example. You are working in a corporate office, and we all know that the place where are humans, then there will always be some politics going on, whether it be any corporate office, whether it be any business company or any other company, whether it is in sports, in education, any field. जहाँ पर इंसान होंगे वहाँ पर पॉलिटिक्स होगी ही होगी. So how we can just surpass those our so-called enemies? So the thing is, just work harder. Give them answer by your work. तुम हार्ड वर्क कितना कर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल like your boss goes back to his home at around 8 p.m. in evening time, so you must go back at home around 9 p.m. do that extra shift. If your boss came to office in morning at 9 a.m. so you must came at office at 8 a.m. so you should try to do these things and identify that things also. I am not in that corporate background, so I do not have much idea about that. If you are in that, so you can identify those. Okay, challenge number 4 is, which is one of my favorite, is make use of mental imaging. Like भाई ये one of the best हो सकता है तुम्हारे लिए, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, और and I will recommend it to you also. Like when I do my workout, when I go to gym, I do my workout. Like I am on the last set, few of the last reps are remaining, and I'm not able to lift weight. So I just imagine myself that okay, this is me now, but after 4 to 5 months, if I do this continuously for next few months, then
I will be achieving this much amount of good physics, I will be getting abs. So मैं वो सब चीज़ें इमेजिन करता हूँ एंड आई गेट द पावर, मुझे में वो पावर आ जाती है कि भाई मैं जो रेप्स मेरे बचे हुए होते हैं मैं उनको भी इजीली लिफ्ट कर देता हूँ। तो ये पॉइंट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ कि भाई मेक यूज ऑफ मेंटल इमेजिंग, योर बिफोर इमेज एंड देन योर आफ्टर इमेज, you should make use of that, and it will help you in everything, like either in your strength training, either in your education, like you are learning a particular skill, such as now you are learning, for example you are learning video editing, so now you are making just a simple videos. But if you think that if you do this continuously for 3 to 4 to 5 months and week by week you just have a particular improvement in your skill, then you will then you will be able to achieve a much more higher level in video editing. Your videos will look good, and just think that how कि भाई लोग तुम्हारी वीडियो को देखेंगे कैसे, उस चीज़ को सोचो। तुम खुद अपनी वीडियो को देखोगे कैसे, इस चीज़ के बारे में थिंक करो। ओके, जस्ट यूज दिस थिंग दैट बिफोर इमेज and after image. After you did that particular difficult task, after you pass through that difficult journey, which will have the transition from before to after. Okay, so next challenge number 5 is our cookie jar method, and it is like this: utilize your past success to fuel your tough time. Like for example, मेरे लिए था कि भाई जब मेरे क्लास 12 के बोर्ड्स थे ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत नर्वस था कि भाई मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं, मैच स्कोर कर पाऊँगा या नहीं। बट मैंने अपने दिमाग में इमेज लाई कि भाई जब मेरे क्लास 10th के बोर्ड्स थे, तो उस टाइम पे मैंने उससे पहले कभी भी लास्ट 4 to 5 years से 90% स्कोर नहीं किया था कभी भी क्लास 10 से पहले तक। तो लेकिन क्लास 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, लाइक इट वॉज समवेयर अब इट वॉज अबव 90%। सो मैंने अपने दिमाग में वो इमेज लाई कि भाई लाइक आई हैव डन दिस बिफोर by following some good resources, by a good guidance. So मैं ये चीज़ अभी फिर दोबारा कर सकता हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पहले नहीं हुई मेरे से। मैं ये चीज़ पहले करी हुई है, मैं चीज़ को दोबारा कर सकता हूँ। I can do this thing again, but for that I need to gather, and for doing this now I need to gather that confidence, and वो confidence आएगा वहीं से जो कि मैंने जब मैं उस चीज़ को अपने ब्रेन में रिकॉल करूँगा कि भाई लाइक मैंने ये चीज़ पहले करी हुई है, I have done this before and I can do this now also. Okay, so cookie jar method, it is named like this because तुम उस जो कुकी जार है वो एक एक निकालो। तुम्हारी कुकीज तुमने पास्ट में कभी ना कभी तो कुछ अच्छी चीज़ करी होगी ना, जिसका तुम्हें अपने ऊपर प्राउड होगा, गर्व होगा। तो एक कुकी निकालो, उसे खाओ, उसको देखो कि लाइक आई हैव डन दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस नाउ ऑल्सो। ओके, सो द चैलेंज नंबर 6 इज यूज द 40% rule. Like he has told me that truth about our mind, about our mindset. Like we only put our 40% effort. Okay, any task we do, we only put our, at the starting we put only our 40% effort. Like if you are studying for 5 hours a day and you have enough time left, then and your mind starts to think that okay, I have given my 100%, I cannot give more than that. No bro, it is not true. You can study for 10 to 12 hours minimum, more 10 to 12 hours at least in a day, and तब जाके तुम्हारा वो 100% दिखाई देगा। I hope you understand in this thing. And remove that governor. Governor means your what we call that I'm not getting that particular word in my brain. Like
remove that governor who does not allow you to push your limits. So we must push our limits. Always try to push our limits, like try to develop yourself, try to remove any bad habit in your life which you had accumulate in the past. Try to do that. Okay. And here we comes to our lesson number 7, channel number 7. Develop your own work ethics. Like if you want to achieve huge success in life now, then you need to have very bad work ethics. Like you need to work like hell. Like Elon Musk has said that you need to work like hell if you want to achieve a very huge amount of success in your life. And a small change in your daily habits will lead to a big change in one day. And do एक एडवाइस और जो इस चैलेंज से मुझे अच्छी लगी कि भाई डू वर्क व्हेन नोबडी एल्स इज सीइंग यू। भाई जब दुनिया देखते ना तब उस टाइम तो सारे ही लोग अच्छे काम करते हैं। तुम जो काम है अपना वो तब करो जब तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा है। भाई वैलिडेशन के लिए फेक जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो हम लोगों को चाहिए, फेक वैलिडेशन, स्मॉल एक्शन के बाद हमें ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लोगों से क्लैपिंग सुननी है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके। एंड here we comes to our lesson number 8 is why you failed. Try to identify, try to analyze your failures. Like why you failed, was there a mindset problem, was there any financial problem, what are the decisions which you had made wrong in the past that had led to your this present, and how can you improve them in the present so that your future will be good. And the last is what if my plan works? What if my plan works? If I succeed then भाई सोचो मत ज़्यादा। अगर तुम ये सोचो क्या हुआ अगर मेरा प्लान सक्सीड नहीं होगा, तुम ये सोचो क्या हुआ अगर एक चीज़ सक्सीड होगी तो the life will be changed ना। And make sure if you dream then you must dream big. ये सोचो यार, नहीं तो ड्रीम मत करो। Okay, so that's all for today's video guys. Bye.